Yes, sir. Okay. Sorry for keeping to for waiting my. Okay. Now we have to continue the second unit of the physical chemistry that we have already started. We have seen the two big derivations in the last lectures about the elevation in the boiling point and depression in the freezing point. Today we have to move towards the next colligative property, that is nothing but osmosis and osmotic pressure. In the botany as well as the chemistry, you talk about this osmosis. Osmosis is nothing but the is an osmotic process in a plant, cell, biological membrane, etc. Osmosis is a spontaneous process by which the flow of solvent takes place toward the solution from dilute solution to the concentration solution through the semi-permeable membrane. You can see here the diagram is shown here. Flow of the osmosis has been shown to you. You can see it. See here the NaCl solution is there, and in the another compartment the pure water is there. Okay, and these two solutions has been separated by the semi permeable membrane. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है that is an semi permeable membrane, और एक कंपार्टमेंट में NaCl solution है, दूसरे कंपार्टमेंट में pure water है. Okay, then what happened? Then the flow of the water takes place from water compartment to the NaCl solution due to the osmosis. जब osmosis रहेगा तब क्या होगा? वाटर का फ्लो वाटर कंपार्टमेंट से NaCl सॉल्यूशन में होगा. मतलब जो डेफिनेशन है, एज पर एज द डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, ऑस्मोसिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय व्हिच द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड द सॉल्यूशन फ्रॉम dilute solution from the dilute solution to the concentration solution through the semi-permeable membrane. Our semi-permeable membrane is that if the permeable to solvent molecule but not to the solid particle. मतलब एक ही अगर सॉल्वेंट के लिए परमेबल है तो सॉलिड मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट के लिए ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही वो वहां से ट्रांसफर करेगा. ऐसे में हियर यू कैन सी ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure can be defined as the minimum pressure to be exerted on the solution to from solvent by semi-permeable membrane. Example आपको यहाँ पे दिया है. When NaCl solution is separated by the water, flow of the water takes place toward the solution of the NaCl. If pressure is given on NaCl solution which is equal to the osmotic pressure, the flow of water will be completely stopped. Osmotic pressure spelling I am just making in the correction. Osmotic pressure. Okay. See, you can see if pressure is given on the NaCl solution which is equal to the osmotic pressure, the flow of water will be completely stopped. Osmotic pressure is a colligative property and it is related to the activity of the solvent. Van Tops show that for dilute solution the osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution, which is pi is equal to CRT. This is the Van Tops equation for the osmotic pressure. ये equation ध्यान में रखना, it will come for the MCQ purpose. आपको यहाँ पे दिया है straight Van Tops equation for the osmotic laws. Osmotic laws के लिए आपको क्या बताया? Van Top equation चाहिए. There are two laws of the osmosis. One is the Van Top's Boyle law and another is the Van Top's Charles law. अभी Van Top's Boyle's law क्या कहता है? Osmotic pressure is inversely proportional to volume at a constant pressure. That is, pi is inversely proportional to the volume. You can see here, this pi is inversely proportional to V. That means pi V is equal to constant. Then the second Van Top Charles law, osmotic pressure is directly proportional to the temperature at a constant volume. That is, pi is directly proportional to T. Pi upon T is equal to constant.
एक ये क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्टिव टाइप में फेमस है. Derive Ventop's osmotic equation by the chemical potential method, or derive Ventop's equation as a pi is equal to CRT. Obtain an expression correlating molar mass of the solute with the osmotic pressure. Thermodynamic derivation of the Ventop equation. For this purpose, you have to consider again these two things. At an equilibrium, the chemical potential or free energy per mole of the solvent A will be the same on both sides of the membrane. both side of the membrane यहाँ पे आप देखेंगे solution में है और एक सॉल्वेंट का है, बराबर है. यू कैन सी हियर द फॉर द प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर के लिए यहाँ पे एक पिस्टन दिया है, सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्वेंट है, ये फ्लो इंडिकेटर है यहाँ पे, और उसके बीच में आप देखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. कंसीडर अ सॉल्वेंट इन द प्योर सॉल्वेंट कंपार्टमेंट 1 इज एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नॉट सब्जेक्टेड टू एनी प्रेशर चेंज और सॉल्यूट एडिशन. Therefore, that particular chemical potential d mu a for the pure solvent will be equal to 0, or dGA bar pure solvent is equal to 0. The solvent in the solution compartment is at a constant temperature but subjected to the addition of the solute and the pressure change. आपने देखा होगा आपके प्रेशर के लिए भी एक प्रोजेक्शन है. The free energy change is in as a result of the change in XA. XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. यू कैन सी, you can take it in bracket, means it will remember. Okay, mole fraction of the solvent. सुल्तान को फिजिकल की नोटबुक देने बोले. Okay, then the one equation you will get that RT d ln XA due to the pressure change dP, the free energy change is VA dP, which is equal to VA क्या है? Partial molar volume of A. For the solvent in the solution compartment, the total change is given by the equation dGA bar is equal to VA dP plus RT d ln XA. Okay, then on integrating the above equation, between the limit, दो लिमिट है यहाँ पे, XA is equal to 1 and XA equal to 1 to the XA and प्रेशर P इनिशियल टू P फाइनल, वी गेट, अभी जहाँ पे प्रेशर टर्म रहेंगी वहाँ पे प्रेशर को लेंगे, जहाँ पे XA की टर्म है XA इज इक्वल टू 1 टू फाइनल वैल्यू ऑफ द XA जो भी रहेंगी हो. असल में तो आप सिंपलीफाई करेंगे इंटीग्रेशन को. देयरफॉर VA इज इक्वल टू P इनिशियल माइनस P फाइनल इज इक्वल टू माइनस RT ln XA. द एक्सेस प्रेशर is the osmotic pressure pi. We know XA is equal to 1 minus XB, and for dilute solution XB is very less as compared to 1. Therefore ln XA approximately equal to minus XB, and VA pi which is equal to RT LX that RT XB. अभी क्या किए? ln XA को किससे कंपेयर किए? XB से. तो क्या आएगा? VA P initial minus P final को क्या कंसीडर किए? pi. Okay, क्योंकि this excess pressure is nothing but osmotic pressure which is related by the pi. V A bar pi is equal to RT XB multiplying by NA on both side. अब NA से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, NA से मल्टीप्लाई करने के बाद NA VA पाई इज इक्वल टू RT NA XB. अभी XB की जगह पे हम पुटअप करेंगे. XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड. सॉलिड का मोल फ्रैक्शन क्या रहता है? NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB. एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NA प्लस NB इज इक्वल टू NA. देयरफॉर NA VA पाई इज इक्वल टू RT NA NB डिवाइडेड बाय NA. अभी NA जो है वो एक NA दूसरे NA से कैंसिल हो जाएगा, तो बचने वाला है NA VA पाई इज इक्वल टू RT NB एंड लेट V इज इक्वल टू NA VA bar. Therefore pi is equal to RT NB by V, and pi is equal to RT NB by V. That RT NB by V जो है अभी NB by V is nothing but a concentration, and pi is equal to CRT concentration in terms of the moles per liter of the solution. ये जो equation है as per as your subjective question is concerned, this is the 5 marks question comes in the exam.
ओके अब ये C कहाँ से आया, ये V कहाँ से आया, ये V इज नथिंग बट द वॉल्यूम जो है उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। ओके वैसे ही जो C है, C इज नथिंग बट द NB by V, number of moles of that particular solid divided by the volume, that will gives you the C. Okay, here we will stop. Thank you.